400 points, nearly 400 points volatility Nifty. That's what it showed today. And that's kind of volatility we all expected, isn't it? At the same time, the best part is for long-term investors, as we shared, that it's always that things are all intact, fundamentals are fine, and let's see details of that. So for demystifying what had been spoken in the budgets and the tax implications on corporates and individuals, we have with us our honored guest, Mr. Ashwin Patni. Ashwin is the head of products and alternatives with Access AMC. He has joined the AMC around 2010 as a portfolio manager. He also manages the PMS there, and later he has been elevated to the post of head products. So, welcome Ashwin to our show today. It's an honor to be with you today. So, Ashwin, how do you feel the budget was today? How did it go? So let me take a few minutes to answer that. Ashwin, we are unable to hear you. Um, is this clearer? Yeah, it's better. Yeah. Okay, I'll just try and speak up. But essentially, I think let me answer that. Take a few minutes to answer that. I think broadly, the one-line summary is that the budget was along expected lines. जो हमको लगा था कि focus areas होंगे, which will be predominantly growth related, largely continuity as far as policies are concerned. तो वही एक हमने outcome देखा है. If you look at the big thrust areas. Clearly the number one and the most important thrust area is to support this growth thing. I mean, the most important number, if I can share, 2 साल के अगर हम FY21 और FY22 2 साल को कंबाइन करें, जो कोविड का हिट इकोनॉमी में हमने देखा है, the combined growth in 2 years that economy is at cumulatively is 1%. मतलब ऑलमोस्ट इकोनॉमी जो 2 साल पहले की साइज थी आज भी हम वहीं आगे पहुंचे हैं. ऑब्वियसली 20 वाज अ ह्यूज 2021 वाज अ ह्यूज फॉल एंड 21-22 डिस्पाइट अ वेरी गुड ग्रोथ वी हैव जस्ट बेयरली रीच्ड जो हमारा लेवल था FY20 में. तो बेसिकली जो इम्पेरेटिव इकोनॉमी का वो यही है कि वी हैव टू कीप ग्रोइंग आवर वे आउट ऑफ दैट इज हाउ everyone benefits in the form of better job opportunities, better income, everything else. So जो सबसे बड़ा फोकस गवर्नमेंट ने मेंटेन रखा है वो ग्रोथ का रखा है. दिस इज समथिंग दैट एज आई सेड इट इज देयर इज अ कंटिन्यूटी फ्रॉम लास्ट ईयर. ये ऑलरेडी उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने गाइड कर दिया था. देयर वर सम डिस्कशन कि फिस्कल डेफिसिट पे ज़्यादा फोकस होगा, थोड़ा शायद उसको दे ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन अ लिटिल बिट मोर, बट they have stayed on the path of growth. So to summarize once again, largely along expected lines with a very very strong push and focus जो है वो growth की तरफ सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान रख के ये बजट बनाया है. Okay. And so it was quite a progressive budget. But was it something like, would it somewhere harm their prospect for the elections? Do you think so? The many people were actually expecting it to be a populist budget, and which may end up harming the elections. देखिए बियॉन्ड अ पॉइंट इलेक्शंस को लेके आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते. ये पहले भी उन्होंने बोला है कि जो इकोनॉमी की ज़रूरत है वो हमारी जो रिकवरी है पोस्ट कोविड सिचुएशन से, कोविड में जो इकोनॉमी ने फेस किया सफ़र किया उससे रिकवर करने की. So I think it's a fair thing. I don't think local elections anyway get won or lost by simple budget announcements. These are more local influences at work. So I don't want to get too much into the politics of it, but I think the most important thing is they have taken a huge bet on continuing the growth revival. And if that growth revives, that is obviously better for everyone concerned. So that should help the government Absolutely. as well. Absolutely. Absolutely. Now, were there any changes related to the corporate tax?
So there were the customary adjustments. I think agar aap, broadly, I think, okay, let me take a step back. I think the broad message was that of stability. जो big rates थे, big areas है, वहाँ पे कोई बड़े changes नहीं किए उन्होंने, and that was something again that they have been conscious. Again, this comes from the fact that economy is abhi bhi still in the recovering mode. We've still not completely come out of many areas. We just saw recent third wave. We've still not completely come out of COVID. It is not a time when you can really start tinkering around with too many things at the same time. So they have tried to remain quite stable on that front. They have tried to focus more on stability and continuity of the big policies. But within that, there are a few adjustments. So I can highlight a few things. I think there has been last 2 years there has been a big push on domestic manufacturing, on creating supporting capex. So I think some of those areas they have adjusted a few tax rates within the corporate space to support some of those objectives. Okay. I hear something related to the gold and the diamond. There were some tax benefits or tax reduction talks were happening. Any update on that? So I think they've announced something. We'll need to check exactly what that means. Honestly, it's like it's just gotten out, right? So I think it's too early to talk about the specific effects on tax changes on the individual sectors. Great, great. Important changes in the GST. Uh, uh, it's again largely a story of continuity. They have not looked at uh, 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 they have not looked at too many areas to disrupt or change. Again, GST, the finance minister ने अपने speech में announce किया कि जनवरी में जो GST collection था almost 1,40,000 crores के भी ऊपर था, which is uh, massively higher compared to what the level was 2 years. तो Which एक is जो बड़ा really a good feature है sign. economy का, हाँ, जो एक बड़ा feature economy का कि last एक साल में हमने बहुत अच्छा buoyancy tax revenues में देखा है, tax revenues बढ़ रहे हैं, whether it is the GST revenues, whether it is the direct income tax revenues, or any of the other aspects. तो वो एक अगेन आई गो बैक टू माई अर्लियर पॉइंट कि अगर सब ठीक चल रहा है तो उसको ज़्यादा टिंकर करने से फायदा नहीं है, एंड फोकस इज रिन्यूड रिमेन्स ऑन ग्रोथ. So the government, I think, big picture again, the changes were not too many. GST पे भी, direct taxes पे भी, income tax पे भी, and it was more about some minor adjustments, not worth spending too much time on, but essentially about continuity. What they are trying to do is use the extra money that they have and really focus that towards spending it wisely, in terms of focusing it towards the capex and infra spending. And वो फोकस के साथ उन्होंने ये बजट को अनवेल किया है. देयर इज अ मैसिव जंप इन अनाउंसमेंट्स अक्रॉस कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज बिकॉज ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंजन होते हैं इकोनॉमी के. अगर आप कैपिटल स्पेंडिंग करते हैं, मतलब अगर आप गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग होता है वो दो तरह का होता है. कभी कैपिटल स्पेंडिंग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तरह का स्पेंडिंग होता है जो हार्ड एसेट्स बनाता है, जिसको इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है. गवर्नमेंट का दूसरा एक्सपेंडिचर हो सकता है जो आप सब्सिडीज कह सकते हैं, सैलरीज कह सकते हैं, जिसका बेनिफिट इमीडिएट लेवल पे होता है लेकिन लॉन्गर टर्म बेनिफिट मे और मे नॉट बी देयर. तो गवर्नमेंट के पास हमेशा ये एक डायलेमा होता है कि जब वो स्पेंड कर रहे हैं, अगर 100 रुपये उनके पास टारगेट है उनका स्पेंडिंग का, तो उसमें से कितना पैसे वो किस एरिया में स्पेंड करें. देर इज ऑलवेज सम प्रेशर बिकॉज ऑफ आर चैलेंजेस, खास तौर पे जो इनफॉर्मल सेक्टर का हमने देखा कोविड वगैरह में. थोड़ा they have tried to improve payouts to the informal sector, to agriculture, farmer sector, etc. तो वो हमने देखा कि लास्ट ईयर और इस ईयर के बजट में द सब्सिडी बिल हैज गॉन अप क्वाइट शार्पली. But at the same time, they have also tried to balance it out by also pushing hard towards high quality spending, which is the infrastructure spending. So ये दोनों objectives को they are trying to work that fine path to make sure कि both of these they are promoting in a good way. And obviously the trade-off here is that they have said that they will not be that fussed about अगर थोड़ा सा fiscal deficit few years के लिए ज़्यादा हो जाए
तो वो डेफिसिट का इतना चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि उस डेफिसिट से ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमी को एक बाकी के नॉर्मल पाथ पे लाना। एंड अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो वो अपने आप उससे जो रब ऑफ बेनिफिट्स आएंगे तो काफ़ी हद तक वो अपने आप थोड़ा सा नॉर्मलसी लाने में हेल्प करेंगे डेफिसिट को भी, क्योंकि उससे आपके टैक्सेस में इंप्रूव होता है, इकोनॉमी का बेस इंप्रूव होता है। तो अपने आप आपकी सस्टेनेबिलिटी की पाथ जो है डेफिसिट की वो आपको लाने में हेल्प करती है। सो बेसिकली जो बड़ा मैसेज है वो है कि गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करनी है। बजट के नंबर्स जो हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, बजट के नंबर्स काफ़ी की ट्रांसपेरेंसी का लेवल बहुत अच्छा है। उन्होंने लास्ट ईयर से भी ये चालू किया था, वेयर दे हैड clearly highlighted that they want the budget numbers to become more and more credible. इसके पहले थोड़ा there were always talks about what is there in the budget versus what is there in terms of off budget. Some of those things they have streamlined, और इस साल उसने वो प्रोसेस को कंटिन्यू किया है। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके जो फिस्कल पाथ उन्होंने रखा था अपने लिए पिछले साल से इस साल, उसको उन्होंने लार्जली कंटिन्यू किया है। और जो हम बॉयंसी देख रहे हैं इकोनॉमी में, जैसे पिछले साल का ग्रोथ नंबर 9% के ऊपर है और मोमेंटम बहुत अच्छा है। जीएसटी की हमने अभी बात की, 1,40,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन जनवरी में देखा है। अगर ये मोमेंटम हम कंटिन्यू करते हैं अगले साल, विच इज़ एज ऑफ नाउ दैट इज़ लुकिंग लाइक, लेकिन थोड़ा सा ग्लोबल चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के ऊपर, थोड़ा ग्लोबल बैकड्रॉप थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है इस साल, और थोड़ा सा हमारा ऊपर भी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह का नॉर्मलाइजेशन वगैरह का इफेक्ट का हमको इम्पैक्ट दिखेगा, हायर क्रूड प्राइसेस वगैरह का इफेक्ट दिखेगा, हायर कमोडिटी प्राइसेस का इफेक्ट दिखेगा। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो हल्की सी मतलब चैलेंजेस प्रोवाइड कर सकती है ग्रोथ के लिए। लेकिन ऑन द अदर साइड मोमेंटम बहुत अच्छा है लास्ट फ्यू मंथ्स का, और यही बजट की फोकस थी कि बजट की एक मोमेंटम को कैसे हम मेंटेन करें और कंटिन्यू करें। और जैसे इकोनॉमिक मोमेंटम I think अपने आप में the बहुत best होता part is, sorry, yes. I think the best part is what they said, like growth trajectory is like is on track. So the gives us a very good boost. हाँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया, सबसे बड़ी जो वरी है हमारे लिए कि हमको जो कोविड का हिट आया था इकोनॉमी का और इन्फॉर्मल सेक्टर का, वो बहुत बड़ा ड्रास्टिक हिट था। तो सबसे सिंपल वे में इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो तरीका है कि 2 साल का अगर कंबाइंड ग्रोथ देखें, इकोनॉमी रफली आज भी उसी साइज़ में है जो आज से 2 साल पहले थी। तो पहले जो डी ग्रोथ हुई और उसके बाद पिछले साल की जो ग्रोथ हुई, उससे हमने वो जो होल था वो हमने फिल कर लिया है जो ग्रोथ में था। लेकिन नॉर्मल वे में अगर आप देखेंगे, अगर उसके पहले जाएँ तो इकोनॉमी का एक नेचुरल ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ पाथ होता है, वो अबाउट 6-7% एनुअलाइज़्ड होता है। तो अगर हम एक नॉर्मल वे में ग्रो कर रहे होते तो आज डिपेंडिंग ऑन क्या हमारी ग्रोथ रेट होती, आज इससे हमारी इकोनॉमी की साइज 10-15% ज़्यादा होती थी जिससे बजाय आज हम हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस होल कोविड Right. शॉक, आज इकोनॉमी की साइज एंड इकोनॉमी की साइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से इनकम्स, अपॉर्चुनिटीज, जॉब सब कुछ इससे रिलेटेड है। तो जो ओवरऑल साइज है, वो जो पोटेंशियल उसकी रेट होनी चाहिए थी, जो पोटेंशियल साइज होनी चाहिए थी, उससे आज भी 10-15% कम है, डिस्पाइट लास्ट ईयर बीइंग सच अ गुड ईयर। तो सबसे बड़ा फोकस है कि उसको वापस उसकी ट्रेजेक्टरी पे, वापस उसकी लाइन पे लेके आना, और वही इस बजट में उन्होंने फोकस रखा है। Right. And the best part, मुझे जो अच्छा लगा, like to get the rural people involved as well. So our 1.5 lakh post offices which are there, na, they're planning to bring it by 2022 end into the core banking system. That would help and boost for the rural economy, especially. That also हाँ, something क्योंकि I liked that. I think digitization is anyway has been a big theme. Use of, I Key. think they've talked about use of fintechs, promoting startups. वो सारा सेक्टर भी बहुत important है because it's not just about the traditional channels like post office etc. Now it's about how can we get the new age vehicles, जैसे कि अभी डिजिटल करेंसी की इन्होंने बात की, या जैसे उन्होंने न्यू इकोनॉमी एरियाज को प्रमोट करने की बात की, उनसे भी एक बहुत बड़ा हेल्प होता है। क्योंकि ऐसे इंडियन इकोनॉमी है, ये
हम अभी भी अपने एवोल्यूशन में थोड़ा पीछे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं। आज न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारे इन चैलेंजेस को लीपफ्रॉग कर सकते हैं। तो अगर हम इस बहुत ज़रूरी है कि हम ये नए एरियाज़ को प्रमोट करें। जैसे हमने एक बड़ा मैसिव जंप देखा है फिनटेक्स में, न्यू इकोनॉमी में। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसकी बात की in terms of the amount of new investments that is going into the startup phase, private equity investments into growth, new growth ideas. ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको भी एक encouragement गवर्नमेंट ने दिया है। एक और चीज मैंने देखा था, लाइक गवर्नमेंट इज सेइंग दैट देयर स्पेक्ट्रम ऑक्शन is going to be conducted of 5G. Actually, rollout will happen by 20 to 23. So is this a good ये news again for our existing telecom players? तो ये एक फ्रैंकली नई बात नहीं है। ये उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया ये Hmm. लार्जली एक्सपेक्टेड था, क्योंकि गवर्नमेंट ने रोल आउट का ब्रॉडली जो प्लान था ये मार्केट में पहले से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी। हैविंग सेड दैट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे मैं अभी पिछले ही बात कर रहा था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेसेस, बैंडविड्थ, जैसे जैसे हम लोगों ने टेक बेस्ड इकोनॉमी होती जा रही है, वैसे वैसे बैंडविड्थ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हाई क्वालिटी बैंडविड्थ एंड नेटवर्क अक्रॉस द country, not just in the cities but also in the rural areas everywhere. 5G will massively help upgrade the networks in the country. तो ये एक बहुत ही मच नीडेड रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक सवाल आता है टेलीकॉम स्पेस का, लॉन्ग टर्म दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी, पर उनको ऑब्वियसली एक चीज़ जो देखनी पड़ेगी कि कितना कॉस्ट आता है, क्या कैपेक्स उनको करना पड़ता है, किस तरह का उसको रिटर्न आता है। सो दोज आर थिंग्स दैट वी स्टिल नीड टू सी। तो आज के ये जो बजट सेशन है, इससे which sectors do you think will be getting benefits for, in terms of, like, ultimately for people like us who are investors, we will like to know that ये आज के बजट के बाद कौन सा सेक्टर में तेजी आ सकता है या तेजी बरकरार रहेगा, दैट इज इट विल कीप ऑन मूविंग अप. सो विच आर द गुड सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन, योर टॉप 5 सेक्टर्स? देखिए ऑनेस्टली सबसे अच्छी बात है कि जब ग्रोथ इकोनॉमी में होती है विच इज़ रीजनेबली ब्रॉड ग्रोथ, जो धीरे धीरे हमको दिख रही है, तो वो रीजनेबली ब्रॉड ग्रोथ बहुत सारे सेक्टर्स को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। अगर हम पिछले साल भी देखें तो वेदर इट इज़ डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, चाहे आईटी टाइप का सेक्टर्स है, फाइनेंशियल्स है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में धीरे धीरे हमने एक ग्रोथ वापस अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है। मे बी फाइनेंशियल्स में पहले कम था, लेकिन मोर रिसेंटली वो मोमेंटम काफ़ी पिकअप हुआ है। तो आई थिंक ग्रोथ मोमेंटम जहाँ जहाँ जिस जिस सेक्टर में है, मार्केट के पर्सपेक्टिव से मार्केट को हमेशा ग्रोथ पसंद है। जो सेक्टर अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ दिखा सकता है, टॉप लाइन ग्रोथ दिखा सकता है, उस सेक्टर को उसका मार्केट फेवर करेगा। तो अगर आप बजट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप इतना स्ट्रॉन्ग स्पेंडिंग कर रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ को पुश कर रहे हैं, तो जो भी सेक्टर्स इस ग्रोथ से बेनिफिट होंगे उन सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। सो आई थिंक बैंकिंग फाइनेंशियल्स विल बी वन एरिया। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, दैट कैन बी वन एरिया। some of the domestic consumption type names can be another area, as growth का benefit percolate होता है into incomes in the hand of investors, that will lead to more boost in spending, so domestic spending, consumer stocks को भी benefit हो सकता है। So I think the beauty of this kind of a environment, ये सबसे अच्छी बात है कि ये एक नैरो एनवायरनमेंट नहीं है कि सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स को इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है या कुछ ही सेक्टर्स को इसका बेनिफिट मिल रहा है। इसकी ओवरऑल सबको? ब्यूटी है कि ये बहुत ब्रॉड बेस्ड है, और जैसे हमने पिछले साल भी देखा कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है, बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स है जो इस चीज़ का बेनिफिट ले पाते हैं। और वही चीज़ आई थिंक आज के बजट के बाद वो जो एक ट्रेंड है वो कंटिन्यू करना चाहिए, और वो डेफिनेटली हमको है। एक रिस्क जो हमेशा रहती है, जो एक बढ़ गई है रिस्क पिछले 1-2 महीने में, वो ग्लोबल मार्केट की रिस्क है।
Yes. कि हमारी इकोनॉमी एक आइसोलेटेड इकोनॉमी तो नहीं है। यहाँ का जो भी बजट से हम जो भी पॉलिसीज लाते हैं वो हम डोमेस्टिकली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल ट्रेंड्स को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। वी डोंट नो हाउ दे प्ले आउट, सो सबसे ज़रूरी है कि उस पर भी नज़र रखें एज इन्वेस्टर्स। बट थोड़े बहुत चैलेंजेस वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक द ट्रेंड इज क्वाइट फेवरेबल। So, which sectors would be your top five favorites? If you have to look at sectors, banks is आई something थिंक which you said. हाँ, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स एक्चुअली ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ऑलमोस्ट नंबर वन। मतलब अगर आप सिर्फ बैंक्स के नहीं रखे, बट बैंक को ब्रॉडर फाइनेंशियल्स को भी ले ले, जो कि नॉन बैंक्स है, चाहे एनबीएफसीज हैं, चाहे दूसरे फाइनेंशियल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजर वगैरह। I think this is a great, massive sector which will really do well. IT has continued to do well. I think some of the export sectors will do well. Um, uh, Consumer oriented, whether it is more FMCG or whether it is durables, again will continue to do well. So these are the 4 5 sectors that I can think of. Like I And said, see, these are all the big sectors in the market also. It's not that I am telling you कि कोई एक छोटा मोटा सेक्टर है जो एक छुपा हुआ सेक्टर है और सडनली इमर्ज होके आ जाएगा। बट इसी इस बजट की जो सबसे बड़ी खासियत है, जो मैं ऑलरेडी पहले कह चुका हूँ, इसकी कंटिन्यूटी का जो थीम है, कि जो चल रहा है उसी पे और ध्यान रख के उसी पे कंटिन्यूटी मेंटेन रखना। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इससे कोई बहुत बड़ा आपको चेंज नहीं दिखना चाहिए कि एक अलग सेक्टर्स चल रहे थे और बजट के बाद कुछ और अलग चेंज हो जाएगा। आई थिंक कंटिन्यूटी रहेगी। तो वही मेरा भी कहने का मतलब। so I think one of the good parts is like government is saying even for EV, which was a top of our top one of the top topics in the last few days, like they will promote a shift to public transit usage through special zones with zero tolerance for non-public transit and encourage EV only operations. So battery swapping policy जो है, they are going to come back very soon. So cars and what do you call vehicles which are using uh, petrol, diesel, and any other kind of uh, fuel, so they will be coming up with a policy with which they can actually swap it with batteries, and that is quite encouraging. They don't have a policy right now on this, but that is quite encouraging. नहीं, वो So, किसी ओवरऑल थ्रस्ट जो था बजट में, एक एनवायरमेंटली अवेयर एंड एनवायरमेंटली कैसे हम अपने को सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रो ऐसे करें ताकि वो सस्टेनेबल ग्रोथ हो, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हो। सो दैट इज़ अ बिग थीम। आई थिंक नाउ more and more relevant what we have seen the impact on the environmental in the around us। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पेरेटिव होता जा रहा है कि कैसे हम क्लीन एनर्जी, कैसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ को अपना सकें। And I think finance minister was very right, and she mentioned that this has to be one of the big imperatives of the government policies also. They've shown a big push towards the entire space, whether it is in terms of renewable energy, whether it is terms of electric vehicle जैसा आप बता रहे हैं वो, in terms of any the supporting infrastructure। I think India में already we have seen a massive increase in terms of the adoption rates of electric vehicles from a practically zero base last 2 3 years। हमने एक अच्छा एक jump देखा है, but it is still at the cusp of what it of can course, potentially be। I think clearly this will become a massive space, and clearly it will continue to have favorable tailwind in the form of policy support, because policymakers को they will have to be very sensitive to the environmental situation। और उनकी तरफ से डेफिनेटली जो ज़्यादा क्लीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको encouragement मिलता रहेगा। इस बजट में भी they have continued that। I think there were lots of announcements around, as I said, renewable energy as well, clean energy as well as electric vehicles, and all of these things will be a big focus area for the and also for the market। I think we've already seen that even in the market, if you look at the auto sector and the associated adjacent ancillary associated sectors, there is a massive transformation happening in terms of winners and losers, and based on how they are positioned।
for the coming transformation in EVs. एंसिलरीज में ये चीज़ हमको पहले दिख रही है क्योंकि वहाँ पे उनका जो प्ले स्क्रिप्ट है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, दे ऑल्सो हैव अ बिग एक्सपोर्ट प्रेजेंस within manufacturers, OEMs, टू व्हीलर वर्सेस फोर व्हीलर, टू व्हीलर में ये चीज़ थोड़ा और ज़्यादा दिख रही है, फोर व्हीलर में भी धीरे धीरे बढ़ रही है और इट विल बिकम अ ह्यूज थिंग गोइंग Right. So that was about the corporate world and what we are expecting. Of course, our market's price action is showing a lot of resilience, and it just moved up post budget. Of course, we expected some volatility and it will come down, which it did. So today it went up and down nearly by 400 points. I mean, one of the craziest days. So that's for traders and also investors. Now for the salaried class, like people like us. So is there any change there? And what about, yeah, या तो उसमें भी बाय एंड लार्ज आई वुड से द मैसेजेस ऑफ कंटिन्यूटी जो जो बड़े टैक्स रेट्स हैं, तो फॉर you're एग्जांपल not audible. एक बार अश्विन, एक बार थोड़ा सा, हाँ. जो बड़े टैक्स रेट्स हैं, जैसे कि Yes. इनकम टैक्स ब्रैकेट्स क्या हैं, डिडक्शन रेट्स क्या हैं, जो बड़े हमारे जो हमको जो डिडक्शन मिलते हैं जैसे सेक्शन 80C वगैरह हैं, तो इन सब में बाय एंड लार्ज कोई भी बड़ा चेंज नहीं है, कंटिन्यूटी है. सो फॉर मोस्ट पीपल जो है लाइफ इज नॉट चेंज्ड फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर और दिस ईयर टू द कमिंग ईयर. There is continuity, and we've again discussed this, in the middle of a pandemic, economy is recovering. आप बहुत ज़्यादा चॉप एंड चेंज नहीं कर सकते हो, कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. थोड़ा बहुत स्पेसिफिक एरियाज में फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरवीन किया है. आई थिंक लास्ट 1 year has been a big theme, has been the whole crypto space and the digital assets, NFT space. The number of people who have been participating in this has massively shot up. Various numbers floating around. I mean, there's somebody saying 4 crores, somebody said 8 crores people who are participating. So clearly that was an area which it was a matter of time before the government got in to create some stable regulations around it. One way to look at it 30%. is that it has got a clear stable regulatory framework which it was lacking up. It is now clearly specified. But the other way is that there is now obviously a taxation which has come in. So for many people who were active in that in the last 12-24 months, that is one area which definitely they need to now factor in. Other than that, there are some minor tweaks, but by and large for most individuals, taxation situation has not really changed very dramatically. That itself is a like very good thing for us. We were actually observing, will our take home ultimately reduce? Or I even if think it doesn't, if we make some money from here and there, like especially from the equity market, will there be any changes? So has there been any changes in the capital gain side? एक माइनर एडजस्टमेंट उन्होंने किया है where their surcharge has been sort of capped, so effective cap gains, long term capital gains comes rate marginally comes down, but by and large it is stable. And yes, you are right कि वरी रहता है कि मतलब गवर्नमेंट को स्पेशली इन अ सिनेरियो वेयर दे नीड टू स्पेंड मोर, एक टेम्पटेशन हो सकता है कि टैक्स रेट्स बढ़ा दें, टैक्स इनकम बढ़ाने की कोशिश करें. लेकिन दे ऑल्सो हैव बीन मच्योर आई थिंक टू रिकग्नाइज दैट अगर इकोनॉमी वीक है, इकोनॉमी अभी भी रिकवर कर रही है कोविड से, हालांकि मैं 2-3 बार बोल चुका बट मैं फिर रिपीट करूंगा कि recent growth rate से we should not get too misled. Economy is growing obviously at 9% last year, but it is on the back of a very uh, tough previous year. And हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हम अभी भी काफ़ी दूर हमें जाना है टू गेट बैक टू अवर ट्रेजेक्ट्री. तो ऐसे सिचुएशन में जब काफ़ी लोग अभी भी ये खास तौर पे इनफॉर्मल सेक्टर हैं, वीकर सेक्शंस हैं, वहाँ पे अभी भी चैलेंजेस हैं. ऐसे टाइम पे टैक्स बढ़ाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट and tax stability becomes very important क्योंकि you want people to feel positive, they want them to go out and spend, you want them to go out and give do their normal economic activity, और वो एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है. वेरेज ऐसे टाइम पे अगर आप टैक्स रेट बढ़ाते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है क्योंकि उससे इन्वेस्टर्स और जो टैक्स पेयर हैं उनको शायद वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाए, नेगेटिव मैसेज जाएगा. हाँ अपनी स्पेंडिंग होल्ड बैक करें. तो आई थिंक स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी थी और वो अगेन मैं सरप्राइज नहीं है, उन लोगों ने बाय एंड लार्ज
कंटिन्यूटी का मैसेज दिया है और वही उन्होंने डिलीवर भी किया है. सो इन दैट सेंस आई थिंक इट वाज नॉट वेरी सरप्राइजिंग, बाय एंड लार्ज कंटिन्यूअस. एंड आई थिंक अगर ये साल बहुत अच्छा रहा, ग्रोथ फर्दर अच्छी रही, तो इससे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए कमिंग ईयर्स. This time, I think government also realized it's from the it's not related to tax or something. They realized that there's something called a health issue, not just a physical issue. So to address the mental health issues, I think they, which especially caused by the pandemic, they are starting off 23 mental health institutions. So that's something which they are starting off, which is like very nice. हाँ, आई थिंक ओवरऑल हेल्थ इज एन एरिया व्हिच हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ फोकस. आई थिंक एज यू राइटली सेड, लास्ट ईयर और इस साल में काफ़ी इस एरिया पे उन्होंने काम किया है. जनरली यू नो a lot of this is also has to be a question of announcement versus implementation. तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें ये भी देखना पड़ेगा कि इसके ज़्यादा एग्जीक्यूट कैसे होती है. So Ashwin, any last words for us before we start our investing? आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टू रिकॉग्नाइज कि जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कंटिन्यूटी वाला एनवायरनमेंट है, डिसरप्टिव एनवायरनमेंट नहीं है. इट इज़ अ ह्यूज पॉजिटिव बिकॉज अगर आप इन्वेस्टर हैं, खासतौर से अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक स्टेबल लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट, क्योंकि इक्विटी मार्केट की जो वैल्यूएशन है, इक्विटी मार्केट के जो प्राइसेस हैं, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बेसिस पे आता है. और वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ सबसे अच्छी तभी आती है जब उसको एक नॉन डिसरप्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, कंटिन्यूटी वाला एनवायरनमेंट मिलता है, ताकि एक नॉर्मल तरीके से बिजनेसेस अपना बिजनेस प्लान कर सकें, ग्रो कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें. फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि some of that investing had been held back because of the concerns around what has happened in last 2 years, and government is helping push lot of investing and capital spending to revive that. So to answer your question, I think as investors, I think the message is quite a positive one, that the trajectory seems quite positive. The support is there. There is no knee-jerk reaction to try to reverse or change the policy too much. They have tried continuity, and that is the best thing at this point in time for the economy, which is needed. And that is something that should be quite a positive backdrop for the equity market investors in the medium term as well. Thank you, Ashwin. And the best part is today, why this budget was very crucial for me, because somewhere we saw that many of us, like we are retail investors, right? So for many of us, we were observing that the budget is happening after the pandemic crisis is over. The markets have given a very good rally. Will it be time for government to take out some money from our pockets as taxes and invest it somewhere else, or by increasing the taxes? So that's one area which I wanted to observe personally. Secondly, I wanted to observe that are they going to do some populist stuff because of which they will harm the economic growth, which they have Yeah. not done. So not much of changes, like you said, Ashwin, not much of fundamental changes. At the end of the day, my take home, finance ministry is not taking that away from me. So I'm very grateful that no changes happened. Of course, again, appraisal time is also coming. So it depends on my boss how much of growth I will get from there. But finance minister at least has not ensured that government of India is not going to take away anything from our pocket. Ulta, like they have given us opportunities as Indians to invest in India and make money. So I also believe in India like you. So let us keep investing on India. Thank you. Thanks. So thank you, Ashwin, for your time and being with us. It was lovely to be with you. Thank you. Bye. Audience, you can always write to us, you can write Ashwin or me on our Twitter handles. You can directly DM us, and we are always available with you. Happy investing and have a great investment ahead. All the best.
Thank you.